हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंट्रल फोर्स में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने देखा था एंड वी सॉ दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने से क्या रिस्ट्रिक्शंस सेंट्रल फोर्स मोशन में आते हैं। मतलब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड सो व्हेन इट इज़ कंजर्व्ड इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ हैज़ टू बी कंजर्व्ड। तो हम लोगों ने देखा था पहले लेक्चर्स में कि कैसे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने से कैसे बॉडी जो विच इज अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स मोशन हाउ इट इज कन्फाइंड टू ए प्लेन, ठीक है। एंड वी सॉ दैट ऑल सेंट्रल फोर्स मोशन हैज़ टू बी प्लेनर बिकॉज दे नीड टू कंजर्व द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और उस प्लेन में भी द बॉडी कैन टेक मेनी ऑर्बिट्स, ठीक है, बट उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन पुट हो गया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम हैज़ टू बी कंजर्व्ड। और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो आर स्क्वायर थीटा डॉट हैज़ टू बी कांस्टेंट। मतलब बॉडी एक प्लेन में सिर्फ वही पाथ ले पाएगा जहाँ पे आर स्क्वायर थीटा डॉट कांस्टेंट हो। एंड वी सॉ द केपलर वे ऑफ सीइंग दिस रिस्ट्रिक्शन। वी सॉ दैट हाउ aerial velocity has to be conserved. The area swept by r vector per unit time has to be constant every time. तो restrictions हमने देखा कि angular momentum is confining the body to a plane and in that plane also the body can take only those orbits where aerial velocity is constant. अब aerial velocity constant होते हुए भी बड़े सारे path available होते हैं, but God is not happy even with that freedom. It put additional restriction, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिर्फ अगर ओबे करना हो तब भी बॉडी के पास बड़े सारे पाथ होंगे जहां एरियल वेलोसिटी कंजर्व्ड होता है प्लेन में रहते हुए। लेकिन ईश्वर शायद इससे भी खुश नहीं है। दे वांट टू पुट एडिशनल रिस्ट्रिक्शन एंड द मोटिव बिहाइंड पुटिंग दिस एडिशनल रिस्ट्रिक्शन माइट बी लाइक गॉड वांट्स द सिस्टम टू इवॉल्व इन अ वेरी प्रेडिक्टेबल फैशन, ठीक है। See, all the systems which we study in physics except that electronics part is all natural systems. So nature made these systems and nature made the laws to govern these systems. Nature made set of laws to govern this system and set of laws are so in number. Set of laws क्या है? Set of laws है basically set of restriction. Laws are nothing but restriction. कोई भी law होता है तो restriction ही है। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म है तो एक लॉ है, इट इज रिस्ट्रिक्टिंग यू व्हाट यू कैन वेयर व्हाट यू कैन नॉट वेयर, ठीक है। तो लॉज आर ऑलवेज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस। ऑफिस में कई जगह देखिए ड्रेस कोड होता है तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। एवरी लॉ इज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो नेचर मेड द सिस्टम्स and nature want them to evolve in a very predictable fashion and for that it has made laws, ठीक है। मतलब nature want them to evolve not arbitrarily. मतलब nature does not want earth to move in arbitrary fashion around sun. It wants to move in a particular orbit and to do that nature has made set of laws which those particle has to obey and obeying those laws they evolve in a very predictable fashion and that actually happens over here. वही यहाँ पे होता है। Nature made law of conservation of angular momentum that restrict the body to a plane and in plane also it has to move in an orbit where the aerial velocity has to be constant. But even with this restriction the body can have many paths, but we see that nature is putting one more restriction and that restriction is in the form of conservation of energy. और इसके अगले क्लास में लोग देखेंगे कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे करता हुआ कैसे पार्टिकल जो है उसका पाथ यूनिक हो जाता है। It doesn't have freedom to move in arbitrary fashion or move in more than one ways. It will move in a very unique way by obeying these laws. इन लॉ को ओबे करता हुआ उसका पाथ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि यही पाथ में तुमको जाना है, ठीक है। मतलब एडिशनल को और रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, इट विल जस्ट किल द ऑब्जेक्ट। तो इतने लॉज की संख्या इतनी है कि वो बिल्कुल एक सेट फैशन में प्रेडिक्टेबल फैशन में वो इवॉल्व करता है बॉडी। So we'll see that in next video how obeying conservation of angular momentum and obeying conservation of energy, how the path or the orbit of the body undergoing central force motion is decided completely, ठीक है।
Okay, so these two conservation laws will completely define the orbit of a object undergoing central force motion. We will see that in next video. That will be a bit mathematical also, है ना. तो central force में mathematics आगे जाके ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. So don't worry about it. We will see each and every step. So let's talk about conservation of energy right now. Right? We had the central force. Central force is given by right, and if you have the object or the particle subjected only to a central force, अगर कोई body पे सिर्फ central force लग रहा है, then that central force will be equal to mass into acceleration. And we use plane polar coordinate in central forces chapter. Why? Because if you use plane polar coordinate, then in that case the force will be function of just one variable. अगर सिर्फ अगर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो ये जो फोर्सेज है वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल रहेंगे. अगर कार्टेशियन यूज करेंगे तो ये r जो है √x² + y² होता है. इन दैट केस फोर्स विल बिकम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव फोर्स इन टू वेरिएबल्स. हम लोग फोर्स को दो वेरिएबल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उसका मैथमेटिक्स भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ऐसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है. अब दो वेरिएबल के फॉर्म में ले लेंगे तो इट विल बी अनडूएबल, इनफैक्ट कर ही नहीं पाएंगे फिर. इसलिए हमेशा ही हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं सेंट्रल फोर्स के चैप्टर में, बिकॉज इन दैट केस फोर्स आगे चल के पोटेंशियल भी आएगा, ठीक है. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, वो भी वन वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, तो उससे था मैथमेटिक्स इजी रहता है. नेचर डज नॉट रिस्ट्रिक्ट यू टू यूज दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम. इनफैक्ट नेचर इज वेरी साइलेंट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोई भी लॉज देखोगे, उस लॉज में कहीं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का वर्णन नहीं होता है. इसका मतलब है नेचर डज नॉट मेक्स एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेफरेबल, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लेते हैं, इस आर डिस्क्रिप्शन, एंड वी टेक कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सच ए वे दैट द मैथमेटिक्स बिकम ईजियर, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेचर कभी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जिक्र किसी भी लॉज में नहीं किया है. ओके, सो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला वीडियो देख लेना है, ठीक है. और उसको एक्सप्रेशन को याद भी रख लेना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, ठीक है. एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या था? r डबल डॉट माइनस प्लस 1/r d/dt सारे. ई थीटा कैप, ये एक्सप्रेशन था, ये याद कर लीजिए. इसका डेरिवेशन मैंने करवा रखा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में. सो दिस विल बी r डबल डॉट r थीटा डॉट स्क्वायर ई आर कैप equals to, ठीक है. So ER cap and E theta cap are linearly independent, so we can equate the coefficient of ER and E theta on both sides. You can write as 0 E theta. So I can equate the coefficients. जैसे I cap J cap होता है, वैसे ये लोग भी linearly independent होते हैं. So this will be equals to FR, right? And next thing will be 1/r to 0. म्यू के अंदर ले सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट होता है. So that will simply lead to mu r square theta dot is constant, and we already know this. Why? Because this is nothing but angular momentum. So call it L. So as the particle moves in a plane, this thing remains constant. r और थीटा बदलता रहेगा, but r square थीटा डॉट नहीं बदलेगा. ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में, यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है. सो L will be the constant of motion as the particle moves in a space in a plane. As the particle undergoes central force motion, the angular momentum is not going to change. R and theta will change, but r square theta dot will not change. So L is the constant of motion. L is mu r square theta dot, and it's not going to change with time. As the particle moves, it's not going to change. We have already seen this. Okay, let's concentrate on this part. देखिए,
Okay, we have already defined central force potential, which is this reference point to existing point, and central force potential is dr, reference point to existing point, and it's nothing but fr, and er dot dr is simply dr, reference point to existing point. So v is going to be minus fr dr, and if I write the integral form of this, is going to be minus, or you can say dv by dr is going to be minus of fr, or you can say fr is minus dv by dr, right? So we can also write this as like this. So this can be written as dv by dr with minus sign. Okay, fine. ठीक है. So this is now mu r double dot minus mu r theta dot square equals plus dv by dr equal to 0. Fine. We are doing some mathematical manipulation now, right, to arrive at the law of conservation of energy. So you have what? Mu r double dot equal to 0. Now we have a constant of motion also, which is correlating r and theta, mu r square theta dot. So from here we can say theta dot is nothing but L upon mu r square. मतलब L क्या कर रहा है, r और थीटा को कोरिलेट कर रहा है. L तो कांस्टेंट है ना, ठीक है. So this will be mu r double dot minus mu r, and this is L square mu square r4. थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बट डरना नहीं है. मैथमेटिक्स हमेशा ही अच्छा होना चाहिए. इनफैक्ट फिजिक्स वालों का मैथमेटिक्स वालों से भी अच्छा होना चाहिए. बिकॉज मैथमेटिक्स पीपल रीड मैथमेटिक्स एंड वी अप्लाई मैथमेटिक्स. सो दिस इज गोइंग टू बी mu r double dot L square mu r cube, right? And if you don't have good mathematics, make friendship with someone who has good mathematics. But अभी तो एग्जाम देना है, तो you have to do mathematics. Okay. Fine. Now let's multiply the whole equation by r dot. See, ये हम याद कर रखे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि अभी मेरे दिमाग में आ रहा हो हम कर रहे हैं, नहीं. I know this beforehand. Mu r cube फाइन. ठीक है. सो दिस इज mu r dot r double dot L square r dot dv by dr r dot equal to 0. And we can write this as d by dt of, right, plus d by dt of this, and here dv by dr by dt. So this is nothing but, आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, सब आएगा. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा. ओके. So this is d by dt of half mu r dot square and v. All right.
So you have v plus half mu r dot square plus equal to constant. Fine. What is this? We call it central force potential energy. Or central force potential. What is this term? Before you know this term, you must keep in mind कि you have the velocity का expression इस type से होता है. This is radial component of the velocity, this is transverse component. So this is nothing but radial k. इसका radial k. ठीक है? What is this? You'll get the idea of this term if you put the value of L. L का value अगर put करें mu r square theta dot whole square, ये क्या आ जाएगा? This. ये क्या है? Square of transverse component. So this is nothing but transverse k. And if you add radial k and transverse k, you'll get total k. नहीं, ये टर्म ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 mu r dot square plus r square theta dot square. है ना? This is total k. So we are finding what? The potential energy plus kinetic energy is constant. Or we can say the energy is constant. Energy is constant. In central force motion, the energy is constant. This is E. Right? The energy is constant. You have three components: potential energy, radial k, transverse k. So adding together, they all remain constant. As the body undergoes central force motion, the potential energy can change, kinetic energy can change, but some of the potential and kinetic energy, which is total energy, will remain constant. So we have come across another constant of motion, that is energy. So in a central force system, your L is constant, E is constant. You have two conservation laws, two constants of motion. ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहेगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे एनर्जी कंजर्व और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होते हुए पार्टिकल जो है कैसे उसका पाथ जो है यूनिकली डिफाइन हो जाता है. वी विल सी देम इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.